हेलो गाइस, आई एम शुभम फ्रॉम शुभ ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में था, हमने एक ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, राइट, एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बेसिकली देखा है, राइट। दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द रिलेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, राइट। So before we start, subscribe to our channel and press the bell icon to get notified whenever new video is out. This is absolutely free from your side, but this will help us grow. So membrane transport protein, there are three categories majorly, right? First of all, channels, then transporters, and ATP driven pumps. Okay, ATP driven pumps. Channels passive है, ट्रांसपोर्टर्स और कैरियर्स, राइट, पैसिव और एक्टिव। जो एटीपी ड्राइवन है, दिस इज एक्टिव। ओके, सो द पैसिव थिंग्स वी हैव कवर्ड, राइट। इन दिस वीडियो वी विल कवर द एक्टिव थिंग्स। ओके, so active transport, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी टाइप्स हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी है, दैट इज जो हम पढ़ते हैं बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एंड जो सेकेंडरी है, दिस इज with the help of ions, right? This can be said as ATP driven. इसमें ही ATP driven pumps आते हैं, ATP pumps, and जो ions है में ion driven pumps आते हैं, right? Again, this active transport, basically इसमें ही the three types again, or two we will say, two types: uniport and coupled transport. यूनिपोर्ट मीन्स सिंगल मॉलिक्यूल होगा, पास करेगा, राइट। एंड कपल ट्रांसपोर्ट में टू टाइप्स: सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सपोज आई ड्रॉ योर अ प्रोटीन, and this is a membrane, molecule will pass uniport, right? सिमपोर्ट में सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा ऑफ द टू मॉलिक्यूल्स, टू मॉलिक्यूल्स। एंटीपोर्ट मीन्स अपोजिट, एक मॉलिक्यूल डाउन, एक मॉलिक्यूल अप, राइट। सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सिमपोर्ट also called as co-transport, okay, co-transport. These terms are very important, right? Basic है, but this can be, this tricks us basically. मतलब क्वेश्चन में कुछ भी टर्म्स यूज कर सकते हैं, तो यू हैव टू नो व्हाट इज व्हाट, राइट। एंटीपोर्ट जो अपोजिट मूव कर रहा है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सचेंज, एंड द प्रोटीन इज कॉल्ड एक्सचेंजर, ट्रांसपोर्टर बेसिकली, क्या हम एक्सचेंजर बोलेंगे। एक्सचेंज करता है ये, एंड ये को ट्रांसपोर्ट, गॉट इट। दिस इज द मेजर क्लासिफिकेशन you have to know. Now let's understand with the help of pictures here.
दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप्स दिए हैं इसमें। कपल ट्रांसपोर्ट, इसमें सिंपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। नेक्स्ट एटीपी ड्राइवन विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड लाइट ड्राइवन पंप। लाइट ड्राइवन मीन्स विद द हेल्प ऑफ लाइट यू कैन सी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। okay, इसमें एग्जाम्पल है, रिमेंबर दिस। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बैक्टीरियोरोडोप्सिन। बैक्टीरियोरोडोप्सिन। सेकेंड फोटो सिस्टम। photosynthesis करेगा, right? We know with the help of sunlight. So these are the two examples of light driven pump. See, we saw this uniport single transport है, transport of single molecule. couple transport में symport है, antiport है. symport same direction में, antiport opposite direction. को transported ion मदद से यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट। okay. So majorly co-transported ion is Na+. Right? Remember this, very important. Na+ को-ट्रांसपोर्ट होता है, इसके साथ दूसरे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, लाइक ग्लूकोज, और वी कैन से Na+, K+, pump. These are the two important, इसके बारे में we will discuss in some time. Now this ATP driven pump जो है, ATP driven pump, इसमें अगेन टाइप्स है, 4 टाइप्स। P टाइप pump, P stands for phosphorylation, P for phosphorylation, मतलब यहाँ पे phosphorylation होता है of the transporter. You can see here phosphate is attached and उसके मदद से यहाँ पे ATP हाइड्रोलिसिस होगा, right, and transport of molecule H+, K+, Na+ or calcium 2+, right? Then second type is ABC transporter. Okay, what is ABC again? ATP binding cassette. ATP binding, okay, very important. ATP binding cassette transporter. यहाँ पे 2 domains है of ATPase, 2 domains. See, here one ATP is there, here one ATP is there. Okay, ATP का हाइड्रोलिसिस होगा and then this molecule is transported. You can see. Now this third and fourth type, V type and F type. You can see from the picture, these are similar. दोनों भी similar है in the structure, right? But they are opposite in the function. Okay. So V type है, V type. V stands for vacuolar. Okay, V stands for vacuolar. मतलब वैक्यूल में जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। यू कैन सी यहाँ पे भी एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टर जो है एफ टाइप, एटीपी सिंथेस। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी ट्रांसपोर्टर, राइट। एटीपी ट्रांसपोर्टर जो है इसमें ये अलग है। व्हाई? बिकॉज दिस इज सिंथेस। एटीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, राइट। एडीपी प्लस पीआई एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होती है, बाकी सब में हाइड्रोलिसिस। इसीलिए मैंने क्लासिफिकेशन में ऊपर लिखा विद द हेल्प ऑफ एटीपी। हियर आई डिडंट मेंशन एटीपी हाइड्रोलिसिस और लाइक दैट, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। जो 3 टाइप्स है, पी टाइप, एबीसी एंड वी टाइप, इसमें एटीपी हाइड्रोलिसिस हो रही है। एंड जो 4 टाइप है, एफ टाइप, उसमें हो रहा है एटीपी सिंथेसिस।
तो ये जो एटीपी सिंथेज है एफ टाइप, दिस इज बेसिकली एटीपी सिंथेसिस। हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो दिस टेक्स प्लेस बाय दिस ट्रांसपोर्टर। एच प्लस ग्रेडियंट, यू नो एच प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा एंड एटीपी का फॉर्मेशन होगा यूजिंग दैट एनर्जी, राइट। So you have to remember this very important. Now this is again one picture, very important. You can make a screenshot because इसमें डिटेल में दिया है. So this is a P class pump. We will read now. यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुआ है सी, एटीपी से एडीपी होगा ही, सब में होगा सी, एटीपी एडीपी प्लस किया है एवरीवेयर. दिस इज एफ क्लास, यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है. एबीसी में अगेन एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा. तो लेट्स स्टार्ट विथ पी क्लास. पी क्लास में क्या है? फॉस्फोराइलेशन वी नो. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड फंगाई H प्लस पंप. एग्जाम्पल भी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट. H प्लस पंप आता है इसमें. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हायर यूकैरियोट्स, Na प्लस K प्लस पंप, सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप भी इसमें आता है. नेक्स्ट इज अपाइकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन स्टमक. So this is example H plus K plus pump. Apical plasma membrane of mammalian stomach. Plasma membrane of all eukaryotic cell, calcium 2 plus pump. Okay, examples है, important है, you have to remember. Then sarcoplasmic reticulum membrane in muscle cells, calcium 2 plus pump. Okay, calcium 2 plus pump, sodium potassium pump, right? Then H plus pump, H plus K plus pump. These are the examples. V class pump, as I said, vacuolar membrane in plants, yeast, other fungi. Endosomal and lysosomal membrane in animal cells. Right, जो वेसिकल्स फॉर्म होंगे, वैक्यूल्स फॉर्म होंगे, उसमें प्रेजेंट होगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट एंड सम किडनी ट्यूबुल सेल्स, उसमें ये पम्प्स प्रेजेंट होंगे. बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन F class. We know F class is ATP synthesis. Then inner mitochondrial membrane. So we know यहाँ पे फॉर्मेशन होता है एटीपी का, राइट. थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इंपॉर्टेंट है लोकेशन. एबीसी सुपर फैमिली, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमाइनो एसिड, सुगर एंड पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर. Mammalian plasma membrane, transporters of phospholipid and lipophilic drugs, cholesterol, other small molecules. Right? ABC superfamily. ABC superfamily का we will see use of ABC transporter. तो bacterial है. First bacterial ABC transporter, then eukaryotic ABC transporter. Okay, यहाँ पे solute binding site है सीरीज. जो मेम्ब्रेन में इंसर्ट होगा दैट इज हाइड्रोफोबिक, सिंपल, राइट. स्मॉल मॉलिक्यूल विल एंटर हियर, बाइंड होगा एज वेल एज 2 ATP बिकॉज 2 ATP डोमेन्स आर देयर, राइट. ATP डोमेन 2 प्रेजेंट है, सो ATP बाइंड, देन द हाइड्रोलिसिस विल टेक प्लेस एंड द मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड. ओके, यूकैरियोटिक ट्रांसपोर्टर भी सेम, यहाँ से मॉलिक्यूल बाइंड हो रहा है. अभी 2 ATP डोमेन are there. ATP domains are 2. 2 ATP will bind. Hydrolysis will take place. Right. First molecule is getting transported here. पहले ट्रांसपोर्ट होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू. यहाँ पे आफ्टरवर्ड्स ट्रांसपोर्ट इज टेकिंग प्लेस इन बैक्टीरियल. इन यूकैरियोट्स फर्स्ट ट्रांसपोर्ट होगा, देन एटीपी हाइड्रोलिसिस. इसमें थोड़ा फर्क है, राइट. नाउ एबीसी जो ट्रांसपोर्टर है ना, वी विल डिस्कस दिस मोर बिकॉज
This is very important. And what? Why? I will tell you. So this is largest family of transporters. Okay. Largest family of transporters. Largest family of transport protein. Next is ये जो है ट्रांसपोर्टर that gives multiple drug resistance. Multiple drug resistance. MDR. तो इसे हम मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन भी बोलते हैं. Okay, that is why it becomes a clinically important protein or transporter also. Right? Multiple drug resistance means what? From the term, what we can understand, it gives resistance to the drug. Right? कैंसर सेल्स जो है कैंसर सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. Okay, thus the cancer cell become resistant to the chemotherapy. Okay, मतलब ड्रग से कुछ असर नहीं पड़ता कैंसर पर. It becomes resistant. वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. कुछ भी दवाई दो कुछ असर नहीं पड़ेगा. राइट. वाई इट डज सो? बिकॉज जो ड्रग का मॉलिक्यूल अंदर आता है ना, सपोज ड्रग का मॉलिक्यूल अंदर आया ना, तो उससे भी ये बाहर निकलेगा, उसको भी आउट ऑफ द साइटोसोल फेंक देगा. राइट. ड्रग का मॉलिक्यूल आया, सपोज दिस इज अ ड्रग, इट विल पंप ड्रग आउट. तो ड्रग साइटोसोल में सेल के अंदर रहना चाहिए, बट वो इसको बाहर रिलीज करते हैं, पंप करते हैं. तो दस इट बिकम्स रेजिस्टेंट. प्रोटेक्शन मिलता है सेल को. बेसिकली कैंसर सेल्स हैव मोर नंबर ऑफ दिस प्रोटीन नोन एज MDR. इसमें और एक एग्जांपल है CFTR. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर. ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर. So this is a chloride transporter. तो क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करता है ये. तो दिस कॉजेज सिस्टिक फाइब्रोसिस, अ डिजीज में अगर म्यूटेशन है इस जीन में और प्रोटीन में, then chlorine transport does not take place, especially in the lungs. Especially in the lungs. Right. This cause a problem. Okay. Salt water balance is disturbed, we can say, because ion involved. So this is very important of ABC transporter. Now we will see some examples basically. First example, sodium glucose transporter. In the previous video, जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमने देखा उसमें ग्लूट्स है, तो ग्लूट्स है पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं. एंड ये जो है दिस इज रिलेटेड टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट. बेसिकली सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. SGLT. दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यू कैन सी जो ग्लूकोज है सोडियम जो है सोडियम का इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट है हाई टू लो. राइट. सोडियम. तो फर्स्ट सोडियम विल बाइंड एंड ग्लूकोज इज अ कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करता है ये. राइट. सोडियम एंड ग्लूकोज के बीच कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल
टू कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे होते हैं. ऑक्लूडेड मीन्स टाइट पैकिंग, राइट, एम्प्टी है. आउटवर्ड ओपन मतलब अंदर बाहर से ओपन होगा टू टेक द मॉलिक्यूल इनसाइड, राइट. फर्स्ट you can see sodium is getting inside. After sodium, glucose will come. Okay, and when both are bind, occluded occupied मतलब tight पैक करेंगे. ओके, देन इनवर्ड ओपन अंदर से ओपन होगा टू ट्रांसपोर्ट द मॉलिक्यूल इनसाइड द साइटोसोल. So again, first sodium will be released, then glucose will be released. Again, the conformation will change to occluded empty. ओके, जो ग्लूकोज है उसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हाई टू लो, लो टू हाई, सॉरी लो टू हाई. ठीक, सोडियम के मदद से यहाँ पे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टीम पोर्ट, राइट, स्टीम पोर्ट, और वी कैन से को ट्रांसपोर्ट. नाउ नेक्स्ट टाइम सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप. दिस इज एग्जांपल ऑफ पी टाइप ATPs. इस ईयर ATP फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टर का. आफ्टर ATP हाइड्रोलिसिस ADP रिलीज, फॉस्फेट विल बाइंड. अभी इसमें दैट इज हाउ टू रिमेंबर. आई विल टेल यू वन टिप. फर्स्ट ऑफ ऑल I will draw again here the transporter. So what happens here? Na plus बाहर जाता है, K plus inside, right. जो सोडियम है हाई टू लो, अगेन हाई टू लो. जो पोटेशियम है उसका ऑपोजिट है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ऊपर लो है नीचे हाई. दिस इज बेसिकली टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल चार्ज. जो फंक्शन है इस पंप का टू मेंटेन द पोटेंशियल, बेसिकली concentration of sodium and potassium inside and outside of the cell, right. तो जो सोडियम है Na प्लस बाहर चाहिए, बाहर जाता है ऑफ द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर. तो हाउ वी कैन रिमेंबर Na इज देयर ना साइन, so we can remember नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, right. So 3 Nas are released outside because they are not want to the cell. की जरूरत नहीं है तो नहीं चाहिए, so it will be released outside. And K plus we want 2 Ks come inside. Okay, when you remember of this Na नहीं चाहिए, K plus तो चाहिए होगा, right. So you have to remember this 3 Na रिलीज होते हैं and 2 K plus in the cytosol, right. This is very important. बहुत बार इसके रिपीटेटिव क्वेश्चंस आए हैं. That only topics I am highlighting here, right. Now you can see from this picture, these are the pictures of gut lumen, basically intestinal thing. You can see gut lumen में there are pumps. How this takes place, this has to be noted. Okay, यहाँ पे microvillus है in apical domain, then intestinal lumen is there. Okay, and there is a tight junction, then intestinal epithelium, extracellular fluid. यहाँ पे सोडियम ड्राइवन ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट है. यू कैन सी हियर दिस वन, सोडियम ग्लूकोज, जो सोडियम एंड ग्लूकोज है उसकी एंट्री होगी इनसाइड द सेल. कैन सी सोडियम एंड ग्लूकोज. दिस इज द लैटरल डोमेन, राइट. देन व्हाट हैपेंस, दिस सोडियम पोटेशियम पंप से बाहर भी आएगा
बिकॉज इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना ग्लूकोज को। ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के बाद नहीं चाहिए तो दिस विल बी रिलीज, राइट। के प्लस का होगा एक्सचेंज। अगेन दिस इज अ एटीपी, राइट, पी टाइप एटीपेज। ग्लूकोज भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्लियर। तो दिस इज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर सी। दिस इज पैसिव डिफ्यूजन। जो यहाँ पे हो रहा है ओनली ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन हो रहा है। ट्रांसपोर्टर मीडिएटिंग पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज। दिस इज द बेसल डोमेन, राइट। यू कैन सी हियर हाई ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बीच में है एंड दोनों साइड में लो ग्लूकोज। गॉट इट। वन मोर पिक्चर सेम टाइप, बट यहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा। क्लियर, यहाँ पे ब्लड है, बीच में साइटोसोल, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई एम शोइंग यू। यहाँ से भी बहुत रिपीटेशन हमें मिला है क्वेश्चन। हियर हाई Na, सोडियम इज हाई, पोटेशियम इज लो। लो सोडियम, हाई पोटेशियम। इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में डायटी ग्लूकोज एंड हाई डायट्री सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ से ग्लूकोज अंदर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। दिस इज ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, सोडियम ग्लूकोज HCl. दिस इज एक्टिव एट पी टाइप एटीपेज, अपाइकल डोमेन से अंदर आएगा। एंड जो बेसोलैटरल मेम्ब्रेन है, इससे ये ग्लूकोज बाहर भी जाता है, रिलीज भी होगा विद द हेल्प ऑफ GLUT2. व्हाट इज GLUT? पैसिव, राइट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ग्लूकोज आता भी है, रिलीज भी होता है, राइट। कम्स फ्रॉम अपाइकल साइड, रिलीज फ्रॉम बेसोलैटरल साइड। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोडियम भी है, सोडियम भी रिलीज होगा बेसोलैटरल में विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज, राइट। सोडियम पोटेशियम एटीपेज की मदद से सोडियम भी रिलीज होगा, ओके। यहाँ पे K प्लस का मूवमेंट हो रहा है, यू नो दिस इज सोडियम पोटेशियम फॉर्म। तो पोटेशियम आता भी है, जाता भी है विद द हेल्प ऑफ K प्लस चैनल, ओके। यू शुड नो दैट जो K प्लस चैनल है ना, K प्लस चैनल, दिस इज लीकी चैनल, मतलब गेट नहीं है उसमें, इट लीकी, ऑलवेज ओपन, राइट। तो K प्लस का मूवमेंट होता है बिकॉज दिस इज अ लीकी चैनल नॉट हैविंग एनी गेट, related to passive transport, right? You have to remember this. So this was all about the active transport and the membrane proteins related to it. That's it for this video. I hope this video helps you. If you find this video helpful, do let us know in the comment section. Like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel, and stay tuned for the upcoming videos. Thank you.